So I think we can now start coming to the temple on Ekadashi, no? 12 बजे 12 से 1 तो खाली होता है, जैसे हम पहले करते थे। एकादशी में सब आते थे, मैं करते थे, हम सब चैंटिंग करते थे। अब तो आ सकते हैं ना? My just hospital में my husband was admitted for COVID, and the doctor who treated him, who is his own cousin brother, he was telling us there are 0 cases in his hospital, Pushpavati Singhania. And he said that 0 cases for the past 1 month. And he said that there was a survey done and they found 60 to 70% people have herd immunity now of NCR, Delhiites. So if you're just wearing a mask, it's more than enough. है ना? तो they are telling me every time कि आप आते हो, आपकी टीम कहाँ है? I said सब कोरोना की वजह से घर में बैठे हैं. So they didn't say anything, but they were laughing. You just saw शीतल ने वीडियो डाला है अपने बेटे का, वो एकादशी का ही है. मेरा स्लॉट 12 से 1 था और ये बच्चों का स्लॉट शाम का था. सारे बच्चे आए कीर्तन करने, और झूलन यात्रा भी थी. So we can all plan, isn't it? वीनू, तुम्हारे तो गिनती के दिन है. We should meet more. नहीं आ जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कितना सेफ है. आप कह रहे हो सेफ है तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत मैं तो देखो तुम्हारे सामने ही जा ही रही हूँ. आप तो जा रहे हो. पिछले 2 महीने से 3 महीने से जा रही. Every Ekadashi, twice a month. नेक्स्ट उसमें ट्राई करते हैं, हम आते हैं. And then this Ekadashi I met Monica Virmani, Anuradha of PVC. She had come there. She was giving donation and I was like, oh, where are you? तुम हमें भूल ही गई. She said, नहीं, आपकी वजह से ही मैं यहाँ जिस मंदिर में. कौन? अनुराधा? अनुराधा, हाँ, ओके. अपनी तो अनु नहीं, वो तो ग्वालियर गई. हाँ, अनुराधा वो वाली आपकी पीवीसी. हाँ, पीवीसी. अनु भी पीवीसी की थी, but yeah. हाँ. So my point is that she is still favorable to Krishna consciousness. Who? Monica. She said this कि भाई, फिर मैंने कहा मेरा कीर्तन है, तो वो जा रही थी वापस, आ गई, बैठी, हम सबने इकट्ठे कीर्तन किया. She and Anuradha और एक और थी लेडी. So you know it's important for us to meet now. और एक दूसरे के घर ना सही तो एटलीस्ट एकादशी तो एकादशी मंदिर में ही सही. And do कीर्तन together. घर भी कर सकते हैं. आप लोगों ने निकलना शुरू कर दिया. हाँ, हम लोग ने भी शुरू किया. Yes. So I mean let's wait for this month. अगर थर्ड वेव ने आना है तो आ जाए, पता वो भी चल जाएगा. But at least एकादशी को तो फिर भी मिल ही सकते हैं. और खाली होता है 12 बजे. And then we can all have prasadam. He said, Mataji, get your team. We'll make a ladies kirtan team. मैं तो चाह रहा हूँ. And then हम आपका प्रसाद भी separately organize करवा देंगे. All of you from the temple separately. So what more do we want? इतना वो हमें support करने की कोशिश कर. We should meet next Ekadashi, all of us, and you will learn the art of kirtan. You will learn how to glorify the Lord. ये भी तो एक भक्ति का अंग है, सबसे important, है ना? You will learn how to play the instruments, what to do, temple etiquette, Vaishnav etiquette. कितनी सारी चीजें जाकर पता चलती हैं, है ना? So let's plan for next Ekadashi onwards, है ना? कोई एक सेवा ले लो for reminding this. वीनू, आप कर लो. एकादशी आने से पहले आप सबको याद दिला दो कि हमने मिलना है. We'll say that हम मिल in the class. ओके, ठीक है. एक दिन पहले गीता क्लास ही होगी. फ्राइडे है नेक्स्ट क्लास, तो फिर हम याद दिला देंगे. Yes, this has to be, everybody has to be inspired to come. See, now you already know the philosophy. Now it's just how to walk on this path. हमें पता चल गया है क्या करना है ना? हमें पता है the rules and regulations. अब चलना है, जो मुश्किल है ना?
चल रहे हैं, गिरते पड़ते चल रहे हैं. So now it's about doing it together, hand holding each other and walking together. That is what is a group, no? That is what is sadhu sangha, association ये of. तो है, हैंड होल्डिंग वर्क्स. अब रोज सोचती तो थी मैं भी कि सुबह उठूं, चैंटिंग करूं करूं करूं, वो करूं में ही रह जाता था. I mean, once you know कि you have to get up, you have to get up. It is only when you know some other people are there, already there, friends are there, जो कि शुरू कर चुके हैं, they are waiting. True. Similarly, we will start with Ekadashi also. You have to start doing sevas now. These are sevas, and the more you serve, more you will advance. More difficulties will be removed from your path. जितनी आप सेवा करेंगे. Okay, let's have your cameras on, Reshma, Bharti, and I don't know who is we. Vaishali is there. Okay, Vaishali, let's see all your pretty faces. Hari Bol. Hare Krishna. Good morning. Good morning. Hari Bol, Reshma, welcome to Hare class. Krishna. Vaishali, हरे कृष्णा. तुम्ही कुठे आहे? मी घरीच आहे. मला लेकिन दिसत थोड़ा नाही. काम शुरू है, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए. कोई बात नहीं, एक बार ऑन करके हाँ ठीक लो और फिर ऑफ कर दो. ठीक है. There हरे you go. कृष्णा. Hari Bol, welcome. So, yeah. आज नीलम कहाँ रह गई? आएगी. When I called her short while back, तो अभी बाहर से घर आई थी. मैं भी बाहर से अभी घर आई हूँ. I've taken my in-laws. I also came back around 3. के बाद आके मैंने वीनू से पूछा कौन सा वर्स किया था, उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया और अपने बैठ गई. जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जयो गिरिवर धारी, जयो गिरिवर धारी, जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव, जयो कुंज बिहारी. नमो बिना छोड़ दो बेटा, उसको बोला चैंटिंग कर लो. आप बैठ पहुंच श्रीमद् देगी. भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
Shri Advaita Gadadha Shivasadi Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sachidanand Jai Sachidanand Gaura Hari Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Radha Damodar Radha Damodar Radhe Jai Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jai Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshan Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman Jai Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Jai Jai Gurudev Jai Jai Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol 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 हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री श्री राम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भुजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रास्य सांभि वंशी वटतटस्थितः कर्शन वेणुस्वनैर् गोपिर् गोपीनाथः श्रीस्तु नः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वीवी गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। Okay. Where is Preeti Mangla herself? Did you all of you receive a call from Mangla? Yes. Next time she calls you, please inspire her. आप भी आइए. आप भी आइएगा. हम जरूर आएंगे. She is doing nice service. This is hand holding. We know she is struggling with the time management, so let's help her. है ना? All right. YG नहीं है. वैशाली तुम पढ़ पाओगी क्या वर्स को? सॉरी, मैं अगला पढ़ती हूँ, ये वाला किसी और से पढ़वाइए, तब तक मैं थोड़ा जाती हूँ अपनी जगह। All right. Bharti, verse 13. Which verse number? 13. Okay. चादर. Oh, what's happened to your volume? नहीं. Hare Krishna, I will recite. Okay, Rishma. आप तब तक अपना सेट कर लो भारती. तब तक Rishma. Yes, Rishma. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां vidya akartaram avyayam. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. So झूलन यात्रा के लिए गया था कोई कल? As we discussed in class. I will go today. 7:30 to 8:30 Prabhuji was saying that you can come. Which Prabhuji? Kamal Madhav Prabhu. अच्छे से सजाया हुआ है. देखो वो पहुंच गई थी कल शीतल अपने बच्चों के साथ. She has just returned back from a holiday. Go to the temple. Do something. The Lord is the creator of everything. Everything is born of Him. Everything is sustained by Him. Everything annihilation rests in Him. He is therefore the creator of the four divisions of the social order, beginning with the intelligent class of men, technically called Brahmins, due to their being situated in the mode of goodness. Next, administrative class, technically called Kshatriyas,
due to their being situated in the mode of passion. The mercantile men, called the Vaishyas, are situated in the mixed mode of passion and ignorance. And the Shudra or laborer class are situated in the ignorant mode of material nature. In spite of his creating the four divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these four, because not one of the conditioned souls, a section of whom form human society. Human society is similar to any other animal society, but to elevate men from the animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna. The tendency of a particular man towards work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life, according to the different modes of material nature, are described in the 18th chapter of this book. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmins. Although Brahmins by quality are supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth, most of them approach only impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. But a man who transcends the limited knowledge of a Brahmin and reaches the knowledge of the supreme personality of Godhead, Lord Sri Krishna, becomes a person of Krishna consciousness. Or in other words, a Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions of Krishna, namely Ram, Narasimha, Varaha. And as Krishna is transcendental to the system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society. Consider the divisions of community, nation, or species. So, I just called up Preeti. She is with her mother. वो डॉक्टर को लेके गई अपनी मदर को. मैंने बोला वो फ्री हुई है तो मैंने कहा कॉल कनेक्ट कर लो. देखती हूँ. So हमने ये किया था last time the 12th verse, जिसमें हमने देखा था that Supreme Lord is one, Krishna or Vishnu, and he does not belong to this world. He's of the spiritual world. And those who are intelligent, they approach Krishna to satisfy their needs. When they approach Krishna for all their needs, it first purifies their heart. And that purification may take time, but the process starts. And once they obtain their desires, जिसके लिए भी उन्होंने उनकी भक्ति शुरू की थी, once they get that, they no longer want it, like Dhruv Maharaj. Because their heart has already been purified so much of desires. But now they say, no, we don't want this. But people who are mad after sense gratification, they love demigod worship, karma kand. Why? Because you get instant results. You do this yagya, you will get it. So people with less intelligence and who are mad after temporary material benefits, they worship demigods. Why? Because you get results quickly. Similarly, they also worship leaders because it's called getting good connections, good networking. He's a big gun. इनके साथ इनकी बहुत पहुंच है, इनके साथ अच्छे relations बनाओ तो हमारा काम बन जाए. And such kind of people will never be interested in Krishna consciousness because they are looking at instant gain. हमें फायदा क्या मिलने वाला है इसमें, है ना? So people, conclusion is people are rarely interested in Krishna consciousness because एक होड़ जमी हुई है. Everybody believes that this world is only the end of everything, the sum total of everything. जो कुछ भी है बस यहीं पे है, इसी दुनिया में. Okay. And such people are called Pashandi or atheist. Those who consider demigods to be equal to Krishna. उनकी कैटेगरी शास्त्र के अनुसार भक्तों में नहीं की जाएगी, नास्तिक में की जाएगी. So, but what is the definition of God?
that demigods, what do the Shastras say of demigods? That all the demigods are parts and parcels of Krishna. They are like us, jivas. They're material living entities only, all the Devi Devtas. लेकिन उनके पास powers होते हैं. Material हम जीवा से ज़्यादा powers होते हैं. Like Brahma and Shiva के पास भी बहुत powers हैं. But ultimately they worship Lord Vishnu. Here you can see Shiva and Brahma. They also are always praying to Lord Vishnu. And the verse mentions Iha Devataha. है ना? Kankshantah karmanam siddhim yajanta Iha Devata. Iha Devata means any powerful man or demigod in this material world is called Devata. फिल्मों में तो हमने कितनी बार सुना है ये डायलॉग, आप तो भगवान, आप तो इंसान नहीं देवता हैं. So any person who has some extraordinary qualities can be considered a devata. और फिर देवताओं को कृष्ण के साथ मिला दो तो सोचो कितना what a big, I mean, we are really insulting the Supreme Personality of God. And people approach devatas to quickly satisfy their needs. But what they don't realize is कि उन्होंने जो आपको आशीर्वाद दिए या आपको जो सिद्धियां दे दी, they are just like bubbles. कितनी लाइफ होती है एक बबल की. अभी आप हाथ धोने जाएंगे वॉश बेसिन में और साबुन लगाएंगे, खूब झाग बनती है. That झाग is so many little bubbles. कितनी लाइफ है उनकी, मतलब मिनट भी नहीं बोल सकते, seconds भी नहीं बोल सकते, microseconds. And then they get washed off under the tap. So हमारी लाइफ स्पैन इतनी ही है, and similarly देवताओं की लाइफ स्पैन भी इतनी ही है. So is it really intelligent to pray to these bubble-like devatas to satisfy our needs? No, intelligent people will not do that. ये हमने, I'm just doing a recap of the last class. So did we do this difference between Krishna and demigods? No, we didn't do this. All right. So demigods बहुत सारे हैं, 33 करोड़. Krishna only one. This is the first part. Similarly, Krishna is the supreme whole, but demigods, parts and parcels, they are not whole. They are dependent on someone. Krishna is not dependent on anyone. So he is the whole and they are the parts and parcels. Demigods always worship the Supreme as obedient servants, but Krishna enjoys that obedience and that worship. He is supremely worshipable. He does not worship anyone. Demigods are created by the Supreme, but Krishna creates them. He is the Supreme Creator. Demigods exist within the material nature. इसी दुनिया के बने हैं, इसी दुनिया के तत्वों से बने हुए हैं. But Krishna is not made up of bhumi, anal, vayu, earth, fire, air, water, ether, space. That's not what Krishna is made up of. But the demigods are made up of that. Sixth, demigods, they are delegated with various grades of power to manage the affairs of the universe. So each demigod has one specific power. He does not have all the powers. But Krishna is supremely independent. Demigods have material bodies, hence they are subject to birth, old age, disease, and death. But Krishna's body is supremely, completely spiritual. He does not go through birth, death, old age, and disease. Demigods come under the influence of the three material modes of different extents. Sattva, Rajo, Guna. But Krishna is completely beyond the influence of the three modes. उन्होंने तो बनाए हैं ये modes. So ये modes उनके ऊपर dependent है. He is not dependent on them. Demigods are given temporary posts, whereas Krishna is eternally the same Supreme Lord. So I was hearing in a lecture that
71 times इंद्र बने वो राजा, 71 times इंद्र बन के उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या पाप किया, and then he became a pig. So you can see कहाँ से कहाँ गिर जाते हैं. 71 times इंद्र बनने के बाद भी आप गिर सकते हो इतनी बुरी तरह, to become a, you know, pig. So you can imagine कि ये जितने भी देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी पोस्ट कितनी टेम्पररी है. Anybody can sit on that post, है ना? You have to do a certain set of you have to be eligible. You should be doing a certain set of qualities, rituals to become Brahma, and you become Brahma. But you can never take the place of. You cannot do anything to become Krishna. Forget Krishna. You cannot do anything to become Yashoda or Nand Maharaj. Ye posts bhi permanent hai. You can never become Yashoda. You can become Yashoda's servant in Golok, but you can never become her. Okay. So, and now the 13th verse, जो हमने अभी किया. So Krishna has created this varnashram dharma. क्यों बनाया है? इस वक्त तो दुनिया पूरी इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है. सनातन धर्म को खत्म करो. इसमें कास्ट सिस्टम है. They are castists. They are this, they are that. They have ruined the social structure. It's time to share this knowledge with them. Ignorance में बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ी नहीं है भगवद गीता, है ना? पंडित बन गए बिना पढ़े और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कास्ट के ऊपर. Krishna has created the varnashram dharma. Why? So that people can purify themselves. Lord Krishna does not belong to any of these classes, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Why? Because he is the creator of these castes. You know, Krishna here, he is the creator. But the varnashram dharma is based on guna and karma. Guna, karma, vibhajana. And which are these four castes? Brahmins. Brahman कौन थे? By birth नहीं. वो लोग who are in the mode of goodness and who already have an understanding of Brahman. Brahman matlab by quality they are supposed to know at least about the supreme absolute truth, that this energy is the energy of Krishna. But most of them approach only impersonal Brahman, कि भगवान निराकार है. आजकल ऐसे मिलेंगे आपको. Then Kshatriyas, they are the defense class, and those in the modes of passion belong to the defense class because they have to fight and to protect. Generally, people join the army, the police, the air force, navy. They are Kshatriyas. Then Vaishyas, mercantile business people who generate the economy. They are in the mixed mode of passion and ignorance. Passion chahiye to be able to work day after day, make business plans to increase the business, and also in the mode of ignorance. And then comes the working class. They do not have the intelligence of either a Brahman, Kshatriya, or Vaishya, but they are good at work with their hands. And all these three, Brahman, Kshatriya, Vaishya, need the Shudra class, to execute their work. You need working force. No project can be successful without the working class, without labor. So we need, so all four make up the society, and you can see that the society will function smoothly only if we have all four. So ye actually बनाए गए थे according to their nature, not by birth. And Shudra is not what they have made Shudras out today, like untouchables. That was not the meaning of Shudra. Shudra simply meant they have no interest in studying or in fighting or protecting or in making money. They just like to work. So Krishna had made these four, कि Shudra merely by serving these three other castes will be elevated in his consciousness.
And he will also ultimately get a chance to progress in Krishna consciousness. Similarly, Vaishya, just by doing his duty. And you can see here that the color itself is different. A Vaishnav is above even a Brahmin. He is separate from Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Why is he higher than a Brahmin? Because a Brahman's consciousness is at best up to Brahman. That Krishna is, that God means he is an energy or he is a light. But a Vaishnav is he who knows that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And he reaches this knowledge. Such a person is considered a Vaishnava. And Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions, all the Dashavatars and all the other avatars. Can be understood only by a Vaishnav who knows that the Supreme Personality of Godhead is Krishna. And Lord Krishna and one in Krishna consciousnesses. And Vaishnavas consequently are above these four guna karma vibhajana. They are transcendental to all divisions of society because for them, all of four are parts and parcels of Krishna. And they understand that these modes, these four castes have been made for the benefit of people so that they can purify themselves just by doing their work, whatever work has been allotted to them according to their nature. क्योंकि आपकी जो नेचर होती है उसके हिसाब से काम करना आसान होता है, एफर्ट नहीं डालना पड़ता. And what is the purpose of the system? To elevate from animal status to human status. So there is hope for even a Shudra, even a Vaishya, even a Kshatriya to reach the highest platform, develop Krishna consciousness. What is the other purpose? That people could purify themselves by regulating their desires. Such a supreme science. And the process of purification for one whose material desire inhibits him from directly approaching Krishna. This was the purpose of this, making the caste system. That just by following this system, it would gradually purify the jivas and uplift them from an animal status to human status by following the regulative principles of their caste. And people could purify themselves by regulating their desires. Clear? Let me see if there is anything else to be added here. Avyayam. Here a word is given. Vidhi akartanam avyayam. Avyayam means indestructible. Krishna is above any destruction. So now Krishna has appeared in a Kshatriya family and he performs activities, which are obligatory to the Kshatriya clan. So how do we understand these activities? Should we understand that Krishna तो इन सभी चतुर्वर्ण से ऊपर है, तो ये तो क्षत्रिय clan में है. In the next verse, now Krishna will further explain how he is not the doer and the result of thoroughly understanding this. I mean, he is above caste and creed. However, he created this caste system to elevate people of different intelligence. You can see that there are 4 kinds of intelligence in this world. And all the people of this world can be categorized in these 4. There are some people जिनकी रुचि होती है in some sort of a defense. What do they do? What do you do with such kind of people? You cannot tell everyone भक्ति करो, है ना, सुबह उठ के बैठो. So Krishna designed the system कि आपकी जो nature है, जो रुचि है, आप उसी को अगर systematically or regulated form में करोगे, you will come to Krishna consciousness. Just see the science behind caste system.
और क्या बना दिया हमने उसको. So if हमने इस कास्ट सिस्टम को मिसयूज किया या मिसरिप्रेजेंट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डज नॉट मेक द कास्ट सिस्टम द विलन. It makes those people the villain who have misinterpreted it. और इसका solution क्या है? To re-educate the people about the caste system, not to do away with the caste system. किसी में इतनी capability नहीं है कि वो caste system को मिटा दे. Because जितने भी बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, no science, no parent can control the mood of that child. Each child is born with his own nature. A child will be born who will be naturally interested towards art. ये आप नहीं उसमें घोल सकते. कृष्ण ने घोल के भेजा है. There'll be a child as soon as he is born who is naturally interested in building things with his hands. Engineering capabilities, faculties हैं उसकी. ये आप नहीं डाल रहे. आप सिर्फ उसको ट्रेनिंग दे सकते हो उसकी रुचि के अनुसार. लेकिन रुचि वो लेकर आया है. और ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में आ रहे हैं बच्चे in the world. All four kinds of people are being sent into the world because you need all four to run the machinery of this world. You need money also, economy also has to run, defense bhi chahiye, education bhi chahiye, and you need the working class also. Can you do without any? No. And are you planning? किसको क्या बनाया जाए? No. बन के आ रहे हैं, आप सिर्फ ट्रेन कर रहे हो. So there is a science behind why children come with these kind of capabilities, why certain children like this, certain children don't like that, because there is a higher plan going on in the universe, and our job is just to facilitate their interest, their ruchi, and help them develop it, but by obeying the tenets of the Shastra. All four can do their job in cooperation with what the scriptures are saying. Scriptures are actually helping all four caste systems. Okay? Is this clear now? Some mother posted on our group of mothers that, look, my child has just written her first book. And everybody, all the 50, 60 mothers were congratulating her profusely. Oh, your child has written a book, and we are so proud of her. And I'll just read out what is the book that she has written. The name of the book that she has written, she's a 17-year-old. मेरे बेटे के साथ है in the same class. The Indian Social Discourse. Child has written such a heavy book. The Indian Social Discourse. And what is it about? Contemporary conflicts discussed from the Mahabharat's perspective. This is what she has written. The book, the whole book is about this. This is the book, and has been launched, and that child is being applauded. She's a product of her environment, yes. So she will be applauded. Usne apni taraf se she did the best she could. So I asked the mom, because the book says that discussed from the Mahabharat's perspective. So I just asked one question: which copy of the Mahabharat has she read? None. No idea of what the Mahabharata is. But book छाप दी है, और उसमें I asked her to send me a synopsis of what the book is about. And I was expecting. Through her book, the author attempts to draw a comparison using a blend of creative fiction and non-fiction, condemning the acceptance of the caste system, lack of feminism, and conservative attitude towards addressing social issues today. This is what the book is about.
So Mahabharat ki aad leke, you are condemning the caste system, lack of feminism, and you're saying that these are conservative. Now, while all the other parents rightly so are congratulating that your child at such a small age has written a book, will be on social issues, but it's unfortunate that this book is only propagating more that our way of life, the Vedic system or the Vedic way of life is faulty. You know, that this caste system is the cause of all the social problems in India. Ladies are not treated well because of Hindu Dharam and Sanatan Dharam, because of the way we treat the girls. Jabki, it's because people are not following our scriptures. Nobody is teaching our scriptures to anyone. I don't think anybody has even read the Mahabharata. So how can you? And what is the take now? Because this is it's fashionable now. Feminism, anti-caste system, secularism is fashionable. So everybody starts writing on these. And pet project kya hai unka? To bash mythology. So they have converted it into a fiction. पढ़ेंगे नहीं पूरा, but उसको fiction के साथ mix करके अपनी एक philosophies में add करके it's presented. And the orthodox Indian society is what this book is, a critical analysis of mythological ideologies and its prevalence in the orthodox Indian society today. And that's why Prabhupada said, our children are being sent to slaughterhouses, not schools. This innocent young child's mind has already been slaughtered by media. That has convinced the child that there's nothing good in our religion. And why is ये क्यों कर पा रहे हैं लोग openly इतना criticize, backlash क्यों कर पा रहे हैं? Because the Hindus themselves are not standing up to defend or speak. We all have a chalta hai attitude. Oh, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी रोटी कमानी है, बच्चे पालने हैं, life enjoy करनी है. Can you do that for the other religions? No, दंगे हो जाएंगे. Why? Why it's so easy to point a finger, criticize, condemn Sanatan Dharam and the scripture and our Shastra. और वो भी बेबुनियाद. There is no logic. अगर आज आप उनको point wise ये भगवद गीता के ये verses भी अगर उन्हें पढ़ा दें, I'm sure these children will be convinced. Nobody has explained this to them because there are no Bhagavad Gitas in their houses anymore. Nobody is teaching. But internet सबके घर में है ना? And the internet is full of these things, and especially this caste system. It's very important that the knowledge and the right understanding of the caste system should reach the masses. It should be propagated well. Right, YG? I think you know what I'm talking about. Yeah. See, but unfortunately with the reservation system also, right, it is like so, endemic in everything. I don't know, how to actually, solve a problem like this. But as you pointed out, right, I think each of our houses, if we actually, kind of explain the right thing to the kids, then possibly, starting point there, catch them young, teach them at that stage so that the principles get registered in them. Because see, I think, that's my philosophy, it is like, if others don't agree, that's fine, it's their problem. But we will look at how, first we reach that stage before, we start, talking about others, because nobody's going to listen. But from our end, right, let's reform ourselves and let us understand our basis, our, root first. Yes, that's my point. Educate yourself, then Right. and then your friends and family and relatives. Charity begins at home. Right. But True. we need to at least have this knowledge and this information so that when you come across such a thing, you're able to now differentiate, isn't it, YG? Right. Mm-hmm. Before reading the Bhagavad Gita, True. we also would be
saying the same things, isn't it? Right. I remember in, I think, chapter 3, we were talking about this, right? All going behind all these isms and completely forgetting, you know, spirituality and the true purpose, right? And getting caught up in all of these, you know, as you said, feminism and maybe socialism, I don't know. Yes. And, you know, things in Kali Yuga have deteriorated. The Brahmanical caste has deteriorated. Kshatriyas have deteriorated. Of course, everything is deteriorating with time, because time means deterioration. Time means taking you towards death day by day. The moment a child is born, it has started deteriorating, isn't it? It has started coming closer to death right from the day it's born. So all these things will deteriorate. Concepts will deteriorate. What's the thing? How do you revive them? How do you keep it, preserve it? Knowledge, information, sharing this information. This alone will reduce conflict. Otherwise, conflict is going to increase more and more because of lack of knowledge and information. Everybody is so busy bashing Sanatan Dharam right now. You know, they are this, they are that. Isn't it, Vaiji? So true. You know, I can't imagine, you know, as you pointed out, somebody actually criticizing, you know, Christianity and getting away with it, or, you know, Islam and getting away with it. But Hinduism seems to be an open game for everybody. See, as you said, the important thing is go do your research first before you actually make a statement. Yes. I think that's very important, right? So in-depth research, not the superficial research and, you know, so many, because there's actually a reason why things were done in a particular way. And definitely, because this is the argument that, you know, constantly I have with my mom. You know, I keep saying, you know, my mom also, you know, doesn't believe in too much of these rituals, because I tell her that, you know, these are man-made, because they've been made or not what is coming from the Vedas, or not what is actually true, because people at some point, right, have twisted it to their advantage. So we cannot, you know, so that is one thing, but actually understanding what is there in depth, that's important. But unfortunately, you know, there are very few places you can get that authentic knowledge. It's right here in Bhagavad Gita as it is. Right. Chapters of Bhagavad Gita as it is. And thanks to Srila Prabhupada, it is now getting a place in universities and colleges, because you have to their tongue. You give them this perspective as well. They already have the anti-Hindu perspective. Uski to kami nahi hai. But give them this perspective as well. The science behind why our ancient civilization did what they did. Then our children will be able to balance the information that they are getting and not get carried away with all these. Feminism is actually doing the girls more harm than good. Feminism is actually not giving them any protection, because they are being asked to break rules. We don't want to follow any rules. Now, if you want a society where you don't want to follow rules, this means the opposite person standing in front of you is also not bound to follow any rules, correct? God help you then. If you don't follow rules, samne wala is also not liable to follow any rules. Correct, Vaiji? True. See, so, that's why I'm very impressed with Radhanath Swami. Aren't you exposing your girls more to danger? Yeah. You know, so it's not scientific. Totally. It's not scientific at all. See, it's fashionable right now. See, this why, you know, for me, I'm very, very impressed with Radhanath Swami, who's like, you know, coming all the way to understand our, you know, religion. And there are people who are born in this who are criticizing it. You know, that is very sad. Somebody who's got, you know, literally nothing, you know, related to India and still able to do it. That's like amazing. Yes. So that should be the lesson, right, for all of us. Correct. And it's unfortunate that our children's minds are being slaughtered in the slaughterhouses of our schools. Fees हम ही दे रहे हैं, भर के fees दे रहे हैं अपने बच्चों की, for them to slaughter their minds, isn't it? Because we haven't given them the other. They systematically shut down our education system.
So there is no way to educate ourselves, and therefore there is no way to educate our children as well. And therefore we are taking internet ka sahara to understand all these things. I mean, इतना भारी word महाभारत पढ़ के तो मैं दंग रह गई कि इस बच्चे ने महाभारत पढ़ी है, but turns out नहीं पढ़ी है. Are you getting the point? Why I'm stressing so much? Because ये इस वर्स में caste system के बारे में बोला गया है. Do you read anywhere the caste? Sorry. ठीक है, anybody has any objections to what we have spoken? You can speak now, because here Krishna is explaining. That is why please make it your this is the biggest charity of the world. बहुत बाकी NGOs charity कर रहे हैं, लेकिन इस charity की भी बहुत जरूरी है. ये सबसे बड़ा pandemic है इस वक्त इंडिया में. ये भगवद गीता as it is घर घर में होनी चाहिए, because knowledge is power. It's not just some theory, it is power. और अगर all the Hindus will be reintroduced to their culture and their religion, the science behind their religion, they can all unite to fight this oppression against destroying Sanatan Dharma. Right, Vaichi? हम दोनों एक ही ग्रुप पे हैं और वो जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इनसे बात पूछ रही हूँ. इनका मेरा बेटा एक ही क्लास में है, एक ही स्कूल में. Do you have any other take on this, or you agree? No, I agree. Yeah, you know what I'm talking about, right? Yeah. It immediately caught my attention, you know. It was written, and I dug deep. I went and saw the review. Completely I don't know what the word is. It's communism, it's anti-Sanatan Dharma. I don't know what it is. What should we label it? It's just anti-Hindu. And this is scary. Don't take it lightly. ये फायर जो बाहर इस वक्त जल रही है, हमारे दरवाजे तक भी आ रही है. It's going to burn right outside our door. And we have to do something about it. Yet we are not kshatriyas, तो हम बंदूक लेके तो नहीं खड़े हो जाएंगे, बाहर जाके नहीं लड़ेंगे. But we can share this knowledge. We can help distribute these books. These are books of knowledge. And if these books reach even 60% of the homes in Gurgaon, then herd immunity हो जाएगी. जैसे कोरोना में they are waiting. 60-70% भी herd immunity हो जाए, सबको एक बार कोरोना हो जाए, तो ये फैलना बंद हो जाएगा. 40% तो रहेगा, फिर भी उन लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते. वो हमेशा से कोरोना से ग्रसित रहेंगे, उनको आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन 60% तक भी हो जाए तो एटलीस्ट एक पीसफुल सोसाइटी बन जाएगी. एंड दैट्स व्हाट इज आवर टारगेट. दैट्स आवर गोल. पीस इन सोसाइटी, रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इज इट नॉट? डोंट वी ऑल वांट दैट? एंड देयरफॉर वी नीड दीज बुक्स इन एवरी होम. चाहे वो पढ़े या नहीं पढ़े, भगवद गीता एज इट इज शुड रीच every home, and then only conflict will come down. Do you agree, Bhaiji? Yes, Vanita. Let's all take this up very, very, very seriously. Please distribute Srimad Bhagavad Gita as it is. It has a very non-secular, neutral approach about religion. But it is giving the correct understanding of so many misconceptions in the society today about what the Hindu religion talks about women, what the Hindu religion talks about caste. और जो हमें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि it's all bad is actually wrong. This is a very wrong narrative that is being fed to our children.
और हमारे ही अपने बच्चे हमारे ही धर्म के अगेंस्ट हो रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। वी नीड टू हमारे पास मदरसा नहीं है जिसमें हम 7 साल का 5 साल का बच्चा होता नहीं है उसको मदरसा में डाल दिया जाता है और फिर उसकी इतनी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है। वेयर इज इट फॉर अस? कहाँ है गुरुकुल? हम तो एक भगवद गीता इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते अपने स्कूलों में। क्योंकि स्कूलों में नहीं कर सकते तो हमें अपने घरों में करना पड़ेगा और अपने पड़ोसी के घर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलना है। डू यू अंडरस्टैंड? और आपके अपने रिश्तेदारों के घर में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे उनके साथ भी जाकर मिलेंगे। And therefore this book has to be distributed. So please take it up seriously. This is the biggest charity. आगे आएगा। 3 types of charity. Krishna is explaining to Arjun 3 types of charity, and this is the highest form of charity. विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है. It is even above कपड़ा दान, जूता दान, छाता दान, आंखों का दान. उससे भी बड़ा दान है विद्या दान. It's written in the Shastra, because if you have the right information and knowledge, you can automatically take care and correct all the other problems in your life just by getting the correct address to the house. Address ही नहीं है अगर घर का, तो चलते जाओ. Will you ever reach anywhere without an address? How important it is to have the address when you are on a journey. Does that make sense? So, Chaturvarnyam Mahashishtam Guna Karma Vibhagashah Tasya Kartaram Apimam Vidya Akartaram Avyayam. Unchangeable. This system is unchangeable. This will remain. You cannot fight it. Therefore, accept its science. Okay. Next verse, Vaishali or Vaiji? Vaiji, aap padhe. Okay. 14. Yeah. Namam karmani limpanti, name karma phale spruha, iti mam yopi janati, karma birna sabhadyate. There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. Okay. So, as there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong, or that the king is not subject to the state laws, similarly, the Lord, although he is the creator of this material world, is not affected by the activities of the material world. He creates and remains aloof from the creation, whereas the living entities are entangled in the fruitive results of material activities because of their propensity for lording it over material nature. So just as the king is above the rules of the kingdom, similarly, these guna karma vibhajana does not apply to Krishna. He does not belong to any caste. So consequently, he is not favorable to the Brahmins and not to the Kshatriyas and not to the Shudras. He is above all of this. The proprietor of an establishment is not responsible for the right and wrong activities of the workers, but the workers are themselves responsible. So, आपस में अगर धर्म पे और कास्ट को लेकर लड़ाई हो रही है, उसके लिए the maker of those laws, the maker of that caste system is not responsible. This is the shortcoming of the workers who have misused that caste system for their own selfish interests. You cannot blame the proprietor of that firm. जिस कंपनी में अगर workers के आपस में झगड़ा हो रहा है, you can't blame the owner of that company for that झगड़ा. The living entities are engaged in their respective activities of sense gratification, and these activities are not ordained by the Lord. For advancement of sense gratification, the living entities are engaged in the work of this world, and they aspire to heavenly happiness after death. The Lord, being full in himself, has no attraction for so-called heavenly happiness. So,
हमारे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी अपने लस्टफुल डिजायर्स हैं, जिसकी वजह से we become disobedient to the laws of the Lord, and we try to enjoy ourselves, because of which they aspire for heavenly happiness. But Krishna has no such interest. He's not interested in heavenly happiness. The heavenly demigods are only his engaged servants. The proprietor never desires the low-grade happiness such as the workers may desire. He is aloof from the material actions and reactions. For example, the rains are not responsible for the different types of vegetation that appear on the earth. Although without such rains, there is no possibility of vegetative growth. Such a nice example, 2 examples he's given. Vedic Smriti confirms this fact as follows. Nibitta matram eva sau srijanam sarga karmani pradhana karani bhuta yato vai srijya shaktya. In the material creations, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. The created beings are of many varieties, like demigods, human beings, lower animals, and all of them are subject to the reactions of their past good or bad activities. The Lord only gives them the proper facilities for such activities and the regulations of the modes of nature, but he is never responsible for their past and present activities. In the Vedanta Sutra, it is confirmed, Vaisamya Nairgrihanye na sapekshatva. The Lord is never partial to any living entity. The living entity is responsible for his own acts. The Lord only gives him facilities through the agency of material nature, the external energy. Anyone who is fully conversant with all the intricacies of the laws of karma or fruitive activities does not become affected by the results of his activities. In other words, the person who understands this transcendental nature of the Lord is an experienced man in Krishna consciousness, and thus he is never subjected to the laws of karma. One who does not know the transcendental nature of the Lord and who thinks that the activities of the Lord are aimed at fruitive results, as are the activities of the ordinary living entities, suddenly becomes entangled himself in fruitive reactions. But one who knows the supreme truth is a liberated soul fixed in Krishna consciousness. This is verse number 14. So you will understand it simply by this slide. Can you see the slide? The whole purpose of this verse is that Krishna is free from all material attachments. He is unaffected. He is the creator. Although Krishna, the supreme personality of Godhead, is the creator of this varnashram dharam, but he is unaffected by the rules and regulations that govern this varnashram dharam, by all the activities in the material world. And what is the example given to help us understand? Just as there is a company, ye company ke malik hai, he is the proprietor, but he is not responsible for the activities of these workers. वो इन workers को activities दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो activities हैं, इसमें वो जो mistakes करते हैं या अपने आप को injure कर लेते हैं, उसके लिए he is not responsible. ये इनके अपने कर्म है for which they are getting the results. Similarly, a king, when he makes the laws, the king is not subject to those state laws. So therefore, Krishna is aloof from the material actions and reactions. And he is not interested in any kind of material happiness, Krishna. He is not even interested in the heavenly planets. I mean, heavenly planet is temporary, and that's just like dirt for him. So he is not at all interested. Although the people of this world feel, oh, Swarglok is my goal. I really want to go to Swarglok, but that's low-grade happiness. So in workers, ki low-grade happiness does not necessarily excite the owner or the proprietor of the company. And then he has given, Prabhupada has given the example of rain. Rain falls everywhere, ek jaisa. But rain की responsibility नहीं है for the growth of vegetation. वो farmer की responsibility है. खेत जोतना, उसमें सही तरह से खाद डालना, ट्रैक्टर चलाना, बीज correct distance पे डालना, ये उसकी responsibility है. He cannot blame the rain
कि मैंने तो सब कुछ किया था और मेरा धान नहीं होगा, है ना? Although without rain there is no possibility of vegetative growth, but still you cannot blame the rain. Rain is doing its job. You have to do yours. And the Lord only gives facilities through material nature. But the living entity is responsible. So how to understand this is that Krishna is giving you all facilities in this world. He has created the Varnashram Dharam for your convenience. But it's up to you how you use it or how you misuse it. You will get the reactions accordingly. He is not responsible. So for all those people who have the doubt, why do bad things happen to good people? Why are pandemics happening? Please hear it. Krishna is clarifying in this verse that I'm just giving you the facility, but you are responsible for what you do with that facility. If you misuse it, you get the reaction. Maybe now, maybe later. But whatever reaction you get, the Lord cannot be held responsible for that. Is that clear? Hare Krishna, Vanita. Sheetal messaged just now in the chat box that she's not able to see the screen. Who else? I'm able to see this. Black screen आ रही थी इसलिए मैंने लिखा अभी भी अब आ रही है? तो ओके मैं सुन लिया नहीं आ नहीं रही है I am not able to see. Are you on your phone? Yes phone. What about the others? Can you all see? Yeah, I can see. I'm on my phone and I can see. Yeah, even I can see. Maybe you I just can want to also see. rejoin. Maybe if you leave and rejoin, right? It's No, probably just. It's okay. ठीक है मैं देखती हूँ माता जी you continue please. All right. So the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature. Material nature is designed by Krishna. That's your immediate cause. But the Lord is the supreme cause. This is with reference from the Vedanta Sutra. So consequently, he is not partial to anyone, whether Brahman, Kshatriya, Vaishya, or Shudra. But the living entity is responsible for his own acts. And the Lord only gives facilities through material nature. I think that's a very good point that he has made here. So, results of understanding Lord Krishna's nature is that you understand the laws of karma and you do not get entangled in them. On the contrary, you try to use the laws of karma in such a way that you get out of this material world without getting further implicated in the effects and the reactions of the work that you do. This is the result of understanding the laws of the universe. But if you do not try to understand the Lord Krishna's nature, what is the result? Such a living entity thinks activities of the Lord to be mundane, and consequently he gets entangled in this world more and more. Now you understand the value of knowledge, sharing the right address, sharing all of us are on a journey. Do we agree? Do you agree that we are all on a journey here in this world? So Yes. So if we are all on a journey, this means that we should all have in our pocket or in our purse the address of the place where we are going to, because journey means you have to go somewhere. That's called going with a purpose in life. There should be an address, there should be a purpose where you're going. Yes. Now, if you do not have that, you don't know, you just get into a bus. There is a train that's going. And you also climb the train. And somebody asks you, "Kahan ja rahe ho?" Pata nahi. तो फिर क्यों जा रहे हो? क्योंकि सभी जा रहे हैं. ये देखो, ये भी जा रहा है, ये बैठा है, ये भी जा रहे हैं, ये बैठा है. मेरे माँ बाप हैं, वो भी बैठे हैं, वो भी जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कहाँ जाना है, तो मैं भी जा रहा हूँ. Is that intelligent? More important question than that is that safe? Is this the right way to go on a journey? Can you really ensure that you will have a happy and peaceful journey without any untoward incident happening when you don't know where you're going?
and how you should be going there, and who should be your co-passengers. So now aise mein, if somebody climbs into your bogie and says, oh, do you know where you're going? Says, no, like, I know where this train is going, but I know I can give you the address. And he gives the address to that person and tells him that this train is actually going to the end of a cliff from where it's going to fall. आगे track ही नहीं है. तो आप एक काम करना, इस वाले स्टेशन पे उतर जाना. Will you call that man the biggest charity that he has done? Who has saved the people by not only giving them the address of where to go, but also told them how to go there. That's the importance of sharing knowledge. Are you getting the picture? So do not consider this as a normal charity. The focus right now is so much on other kinds of charity. ये सब छोड़ो. This is the general trend right now. पूजा पाठ छोड़ो. अरे शिवजी पे जल चढ़ाने से क्या होगा? पानी की वेस्टेज हो रही है, किसी प्यासे को पानी पिलाओ. This is the dull mentality right now in the society. अरे दूध वेस्ट हो रहा है किसी भूखे बच्चे को. अगर आप वो सारा दूध नहीं भी चढ़ाते शिवलिंग पे, will you be able to really feed all those भूखा बच्चास? But by sincerely following the Yug Dharam, you are actually feeding, not only nourishing your soul, but even the souls of all the other people around you. That's lasting. That is lasting charity. This is what he's trying to say here. That person is responsible. आपको सारी सुविधा दे दी है, लेकिन उस सुविधा के साथ आप क्या करते हो इसके लिए the giver of the सुविधा cannot be held responsible. Pandemic आपने खुद किया है. You cannot blame him. तूने क्या कर दिया? उसने तो आपको सूरज, चंदा, rivers, oceans, सब कुछ दिया. Now, if you have misused that, you can't sit and cry and blame him. He's just a facilitator. You are the doer. And what you do, you are going to be accountable for that. Make sense? That's the whole purport of this verse. Next verse, last verse. Anu, do you want to read? I can try. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. Yeah. So there are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts. And some of them are materially free. So Krishna consciousness is equally beneficial for both. कोई discrimination नहीं करता Krishna consciousness. ना Krishna discrimination करते. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness, and a gradual cleansing process will come following the regulative principles of devotional service. And those who are already cleansed of the impurities, they can also continue to act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. So it applies to everyone. Sadhu and Chor, both. Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. But Arjun's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. One need not only know how to act. To retire, one need only know how to act. To retire from the activities of Krishna consciousness and to sit aloof, making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of
Krishna. So bhakti does not mean सारी responsibility छोड़ दो, सारे काम बंद कर दो और माला लेके बैठ जाओ. Many people misuse this understanding of Krishna consciousness and they try to use this as an excuse to run away from their responsibility. Arjun ने भी वही किया कि मैं जंगल में जाके बैठ जाता हूँ, मुझे नहीं लड़ना. Krishna is saying no, this is a धर्म युद्ध. तुम्हारा family battle नहीं हो रहा है, तुम्हारे दो भाइयों की लड़ाई नहीं है. Sorry, this is not your personal battle. This is a world battle for the future generations, to safeguard the future generations of this world. You better fight because you're a kshatriya and it's your duty to give protection to dharam. Actually, kshatriya की पहली duty है धर्म की रक्षा. बाद में duty है borders की सुरक्षा. And that's what Krishna is saying. So similarly, Krishna consciousness की आड़ में वो ये नहीं कह रहे कि अपने काम बंद कर दो. You have to do all your responsibilities, but in the Krishna conscious way. So Karjun is here advised to act in Krishna consciousness, following in the footsteps of the Lord's previous disciples, like Vivaswan. The Supreme Lord knows all his past activities as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommends the acts of the Sun God, who learned this art from the Lord some millions of years before. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. Okay, so this is the last verse and I'm showing you the slide for 15. So previous liberated souls perform their varnashram dharam for Krishna's pleasure. This is that is the title of this verse. So in this verse, what is he saying? That there are two classes of men. Ek to fully materially polluted, matlab they are here to enjoy. They try to behave like kings themselves. And the others are who are freed from, who are Krishna conscious. Matlab they acknowledge that there is a king of this world and the universe, and I'm here to cooperate with him. I'm not here to control. There is already a controller who is in charge. I have just come here to cooperate with that controller. Such a person is called Krishna conscious. And the materially polluted is who says, I'm only the king of this world, I am only the controller of this world, and I will do what I like. I don't have to cooperate with anyone. Such kind of materially polluted people, even if they take to Krishna consciousness, it will benefit them in a great way. How? By the cleansing process. Cheto darpana marjanam. They will slowly start cleaning their heart of all these lustful desires. So Krishna, and jo Krishna conscious hai person, if he takes up Krishna consciousness, also it will benefit him because he will set an example of by his life, he will teach everyone around him. So Krishna consciousness is for both. And this was what is Lord Krishna's advice also to Arjun. You know, that you follow in the footsteps of the previous disciples, like Vivaswan. Vivaswan ने भी यही किया. और आज इतने सालों के बाद मैं दोबारा से तुम्हें यही गीता का ज्ञान दे रहा हूँ. You engage in the discharge of your duties, but you do it according to the rules and regulations of Dharma. Retiring from the battlefield and sitting is not Krishna consciousness. So neophytes, when neophytes matlab beginners जो आते हैं शुरू में Krishna consciousness में, they have this mentality. Okay, चलो अब ISKCON का मंदिर मिल गया, मतलब हम अपनी जिम्मेवारियों से अब छुट्टी ले लेते हैं and let us just go to the temple and do our bhajan. No, actually, Krishna consciousness means doing the duties. The ashram, जिस भी आश्रम में आप हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, उस आश्रम में ही रहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी करने का तरीका बदलिए. It should be according to Krishna consciousness, according to the tenets of Dharma, according to the rules of the controller of this world. Okay, make sense? कितनी क्लैरिटी आ जाती है ना just by reading. So, any questions? Sheetal?
15th verse किया ना हमने last. These slides make everything still more clear, crystal clear. Crystal clear. Very like a summary also. Yes, and simply put. पहला होता है उसको storytelling. उसको हम एक consolidate कर लेते हैं. So all liberated souls in ancient times also did their work, but working without desire. They worked according to Krishna's desire. So you also do your duty according to my desire. तुम्हारा अपना desire के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो. You are not the controller. You are the co-operator. This is Krishna consciousness. I am not here to enjoy. I'm not here to do as I want. I'm here to do as he wants. And it's difficult. It's very difficult. शुरू में. It's like taming a wild dog. Wild animal क्या है? मर्जी से उठूंगा, कहीं कभी भी खाऊंगा, कहीं पे भी सुसु पॉटी करूंगा, जो मन में आएगा करूंगा. इसी को वाइल्ड कहते हैं. जंगली का यही मतलब है. नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. और जब पालतू हो जाता है, ओनर के हिसाब से उठूंगा, ओनर के हिसाब से खाऊंगा पीऊंगा, जो ओनर बोलेगा वो मैं करूंगा, ओनर के हिसाब से सोऊंगा. यस. तो शुरू में जंगली जो होते हैं बहुत कोशिश करते हैं, नहीं नहीं बंधना, नहीं बंधना. दे विल रन अवे. 1000 एक्सक्यूजेस. ना, मुझे नहीं बंधना, मुझे अपने हिसाब से ही जीना है, मैं राजा हूं मेरी दुनिया का. दुख भी वही पाते हैं फिर, बिकॉज राजा तो वो है नहीं, कंट्रोल में तो कुछ है नहीं. आर्टिफिशियल राजा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन then Maya slaps them left, right and center. Then they come to their senses. Then they become docile. Then they try to become the cooperator, and they realize, oh, I'm happy, I'm peaceful. मुझे प्लान करने की जरूरत ही नहीं है. I just have to follow. It's a less stressful life. It's a more peaceful and happy life. Okay. Next verse we will see. Having said that, one has to work according to the examples of the previous bona fide devotees. Krishna will now explain why one's action should not be independent. The independence jo hai na, it is really the cause of ruin and conflict in this world. ये जिसने भी ये word बनाया है, to each his own, वहीं से कलेश शुरू हो गया. जिसका जो मन में आए, okay, that's his way. Let him eat what he wants. Let him do whatever he wants. उसकी मर्जी. There has to be a common ground for everyone, for the social system to exist. Something to munch on. To each his own is poison. इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं. इससे सॉल्व थोड़ी हो रहा है कुछ. 5 साल पहले जो कॉन्फ्लिक्ट थे उससे ज्यादा ही होंगे आज, कम नहीं हुए. और 5 साल बाद भी ये बढ़ेंगे. बिकॉज एवरीबडी वांट्स स्पेस, मोर एंड मोर स्पेस. मेरे हिसाब से होना चाहिए. वो मेरा हिसाब मतलब किसका हिसाब? दैट डेविल दैट सिटिंग हियर. पर डेविल कभी अच्छा हिसाब कराएगा? कभी नहीं कराएगा. That's why शास्त्र says इस डेविल जो माइंड है, इस डेविल को टेम करो. ये जंगली है, इसको पालतू बनाओ. And therefore we need to chant, and therefore we need to have sattvic ahar, and therefore we need to observe ekadashi. तभी ये जो जंगली प्राणी है अंदर यहाँ पे बैठा हुआ, वो तभी टेम हो सकता है. जब तक वो जंगली रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, और आपके साथ जो रह रहे हैं उनको भी परेशान करेगा आपके थ्रू. So we have to tame this mind, and this mind is very stubborn, very obstinate and very jungly. And therefore all these rules and regulations have been given to tame it. नाक में नकेल डालनी है इस जंगली जानवर के. Okay? So please join tomorrow for chanting. Let us collectively try to tame our mind,
Because if you really see your life, each one of you, examine your life, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं. आपके खुद के डिजायर्स ही आपको परेशान कर रहे हैं. दूसरे लोग कर रहे होंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक भी कलेश हैं, लेकिन आध्यात्मिक कलेश सबसे ज्यादा है. मैं और मेरे डिजायर्स सबसे ज्यादा, पर उससे कैसे भागोगे? बाहर के लोगों को तो सेट कर दोगे आप किसी तरह, जो भी परेशान कर रहे हैं. नेचर परेशान कर रही है, उसको भी अगर आप थोड़ा बहुत सेट कर लोगे, लेकिन ये जो अंदर है इसको कैसे सेट करोगे? Therefore you need to chant. इतना important है chanting. It's to tame this mind. Makes sense? Everybody agrees? Any objections? First time मैंने अपनी क्लास में देखा, सारे कैमरास ऑफ थे. I was there. इक्का दुक्का, and I was like, wow, it's either the verse or it's me. It has to be something. Yeah. So thank you for your attention and your time. Hari bol, Sheetal. Do you agree, Sheetal? Any objections? After you are already so advanced, you have been hearing to so. I am not at all advanced. The people sitting out here are more advanced than me. I have Sheetal, this is absolutely not right. You know your words. You know your depth. You don't know. That's why you're saying like that. I am much way behind a lot of good devotees out here. मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है. So it's like that. You have heard so just like yes. The duration is the duration of listening may be more, but that does not decide that I am advanced or I'm not advanced at all. So, but yes, it's right. जो भी बात This is all because you are very sweet. No. ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं बहुत पीछे हूँ, आपको नहीं पता. Any reflections on what? I am not. You guys, आप तो chanting भी करते हो सुबह उठ के, मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ. So I need to gear up. I know. Phase comes in everybody's life. Post COVID तो मेरा भी बहुत बुरा हाल था. I don't know. In the morning at all, the body used to feel like stone. I was पत्थर को उठाओ कैसे? उठा ही नहीं जाता था. इतना बड़ा पत्थर वहाँ पे डाला हुआ है. ना वजन. बहुत difficult. I used to crawl on my hands and feet. बेड से नीचे गिर जाओ और फिर hands and feet के ऊपर रगड़ के पहुंचो मंदिर तक. Dragging yourself. निकलो वहां तक जाओ. It was so tough. But you have to push yourself. Otherwise नहीं होता. I also need to push myself and possibly come join the morning japa. I think वो helpful होता है. Yeah. So beautiful to actually get up in the morning. Yes. And with all fresh mind and chant. Though I'm not able to actually catch them up at 5:15 when they start. But whenever, like from past 2 days, first day I joined around 6:50. And today I managed to actually cut down 10 more minutes. So I joined at, I think, 6:40 or 6:45. So it's beautiful. Morning time is the most precious one. मैं इतना preach कर रही हूँ खुद आप सब लोगों को पता चला कल मैं ही गायब. इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, please. शीतल, don't worry. तुम्हारा अभी just trip से आई हो, you'll get over from this phase. I know you're feeling low. You have a small kid. We don't have small kid. हमारे किसी के छोटा बच्चा नहीं है. Actually, it's very small. It's very tough with a small kid. But still, you managed to go to the temple and attend and do service. वो बहुत बड़ी चीज, हम तो जा ही नहीं पाते. Service, attend all the programs, listen to the lectures. It is a तो कोई comparison नहीं है. Don't feel low. जपा के लिए तो I'm so happy for Anjali. She is coming at 5:50. Sorry. Wow, Anjali! Wow, Hari. And she is there till 7.
Jai. Just before 7 I left. Jai. So how और many? 1 hour रेशमा is also there. वो भी बहुत Yes. chant करती है. कितने कर लेते हो आप 7 बजे तक? मेरे तो 5:40 5:45 तो about 7 हुए. 5:40 से I started. Till 7 o'clock. Just before 7. 7 I need to get into the kitchen. So my maid comes and all. So Rounds कितने हुए? 7. 7 rounds in about an hour. 9 minutes लगता है 7 approximately rounds मेरे. is good. आप सबके कितने होते हैं नीलम? मेरा 1 hour में I take exactly 6 minutes for 1 hour. So mostly 9 to 10 rounds हो जाते हैं. So by 7:05 I do more than 16, which I've committed. Few extra rounds. कभी बचता है तो I do later on, but normally I do 16 rounds and. Okay. And Veenu? कल कितने किए सबने एकादशी? I did 25. 25. Oh wow. अभी तो 25 ही कर रहा है, नहीं तो 32 था. I used to do 32 but अभी मैंने कल ही वो करे. reading नहीं होता, कुछ नहीं होता फिर. Sometimes I do. But I'm really thankful to you. I can't express कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है. दिन भर कोई टेंशन नहीं कि चैंटिंग करना है, और सुबह चैंटिंग करते हैं वो बहुत अच्छा होता है. एंड देन इन द इवनिंग एटलीस्ट whenever 1 घंटा भी हो चाहे 1.5 घंटा, आप रिलैक्सिंग में मूड में you are able to read or whatever, and in the afternoon if I get time at least I'm able to lie down for 10 minutes also. Otherwise the chanting करने में ही पूरा दिन निकल जाता है. And the quality of chanting throughout the day is too bad. I have to go. मुझे 3 आवाजें पढ़ चुकी हूँ. So I'm going to the temple today. कोई आ रहा है तो आ जाओ झूलन यात्रा के लिए. मैंने कल सुबह पिक्चर देखी थी वो एकादशी पे. All of us should meet now in the temple at 12 o'clock and do kirtan together. हाँ, we have to start going to the temple now on Ekadashi. Join me for kirtan. Okay? It's just us. कोई नहीं होता, सिर्फ हमारा ही ग्रुप है. And they said they will also organize. जो होता ही है. They said if you are in good number, आपका एक separate प्रसाद भी करा देंगे. But please come. Let that be our Bhakti Viksha. Twice a month, let's at least meet. Slowly we can increase. ठीक है? अच्छा, one thing, I am going for 3 days, Saturday, Sunday, Monday. So I won't be able to be there till 7. जो meeting close करने के लिए हो सकता है मैं Saturday को 7 बजे ना रहूं, तो फिर क्या करना है? Because Saturday we are leaving, so I have to, I don't know what time I have to leave, but मैं पूरा टाइम शायद ना रह पाऊं. अंजलि और वीनू can do it. वीनू तो नहीं आती है बाद में. So जो जैसे आज भारती और अन्नू थे, so they wanted to chant, so I made Bharti the host, so she ended the meeting. So Saturday Sunday के लिए decide करना होगा कौन ड्यूटी लेगा. Saturday Sunday Monday, फिर तो Tuesdays again I'll do. तो अभी तुमको वीनू ने तुमको दिए हैं क्या राइट्स अभी? नहीं, जैसे कल आप थे तो उसने आपको होस्ट बनाया था, फिर आप निकलने के पहले मुझे बनाया, फिर मैंने मीटिंग क्लोज की 7:05 पे. ओनली अनु एंड आई वाज देयर. But आज भारती और अनु wanted to chant, so I made Bharti. She said I'll be there, so I made her the host. At 7:05 I leave because उसके बाद मुझे आरती वगैरह करनी रहती है. ठीक है, कर लो आप. अंजलि can do that, है ना? No. Whoever is there. Sunday I didn't plan to join. Actually. Saturday? I'm not too sure. कल तो होंगी. Saturday and Sunday this week I'm not too sure. कल डिसाइड कर लेंगे. कल आने दो. कल फ्राइडे है ना, कल तो रीडिंग क्लास है, वैसे ही हार्डली फ्यू पीपल कम. हाँ. Okay guys. अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो अभी बता दो ना. Anybody who wants to volunteer, जो 7 o'clock मीटिंग क्लोज करना चाहेगा? दिखने का ना, विजिबिलिटी नहीं है कल की, क्या होगा क्या है. कल आने दो, फिर उनको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अपने कल का. मैं कर सकता हूँ कि नहीं. ठीक है. ठीक है. करेक्ट, यही बात है ना? हाँ, so tomorrow I'll be there. हरि बोल. थैंक यू. हरि बोल. हरि बोल. थैंक यू. हरि बोल. कहाँ जा रही हो नीलम? हम लोग जा रहे हैं घूमने. भरत. कहाँ?
भरतपुर में वो जगह है लक्ष्मी विलास पैलेस। 3 दिन के लिए आउटिंग। बच्चे भी बोल रहे थे और सबको डेस्परेटली ब्रेक चाहिए, अमित को भी, मैं मुझे भी चलूंगी। मैं तो घर के, चलो चलो बहुत मजा आएगा मुझे तो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने बोला मुझे तो क्या करूंगी, हम लोग एक्चुअली बहुत सारी जगह ढूंढे तो मोस्टली उधर सब जगह ना वाईफाई की प्रॉब्लम है, तो मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम, बिकॉज सब वो है ना माउंटेनियस एरिया के पास है राजस्थान में, फोर्ट के पास। तो मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 3 दिन मोबाइल नहीं भी चलेगा, नेट इंटरनेट वाईफाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी बुक पढ़ूंगी। तो बोलते हैं बुक क्या पढ़ना, तुम यहीं पे पढ़ो, नीचे गार्डन है, नीचे गार्डन में चली जाओ, बहुत बड़ा गार्डन है, उसके लिए मैं इतने पैसे खर्चे नहीं कर। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा तो नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना ना, मैंने बोला हाँ यहाँ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वहाँ का सीनिक ब्यूटी की मैं बीच के बैठूंगी आराम मजे से बुक पढ़ूंगी। फिर फाइनली हमने जहाँ लिया वहां पे मोबाइल वगैरह का है, वाईफाई की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए जा रहे हैं 3 दिन के लिए। मैं तो परेशान हो गई, काम कर करके तंग आ गई हूँ। आज भी इसीलिए मेरा कैमरा ऑफ था कि अभी मंदिर जाना है, तो काम पड़ा था, बच्चों ने इतना काम किया, मार्केट गई थी काम से, तो इसलिए मैंने थोड़ा काम निपटाया। 7:30 to 8:30 प्रभु जी बोले उससे मैं आना, मुझे लगता है उससे में आरती वगैरह होगी या कुछ होगा, तभी उन्होंने, मैंने पूछा किस टाइम पे आऊँ, बहुत सुंदर सजाया है। शीतल ने डाली ना पिक्चर, फोटो अच्छा डाला है पूरा, हाँ ग्रुप में वीडियो पिक्चर्स डाले ना, पूरा जो ऑल्टर के बगल वाली जगह वहाँ पूरा झूला वगैरह बना के पूरा फूलों से सजाया हुआ है, तो इसलिए मेरा बहुत मन है जाने का। चलो आ जाओ अंजलि, वीनू, भारती, अन्नू को तो नहीं बोल सकती, वीनू को तो मैं फोन करने ही वाली थी तुम लोगों को, बस मैं मार्केट भाग गई थी, काम था जरूरी कि मंदिर चलो। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है, मैंने सुबह पिक्चर देखी, वो सुबह ज्वाइन करती हूँ ना टेम्पल वाला जूम, प्रभुपाद की जो मूवी चल रही है अभय चरण, उसके लिए देखती हूँ, तब वो 7:30 बजे दर्शन कराते हैं ना सुबह भगवान के, तो उस समय रोज उस समय चलाती हूँ तो दर्शन करती हूँ, तब उसमें वो वाला ही साइड का लगा रखे थे प्रभु जी, कैमरा उधर ही लगा रखे थे, तो मैंने देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अपने लोग के टेम्पल में सजाया है। आ जाओ अन्नू उड़ के। मैं वही बोल रही थी कि मैं कितनी अनलकी हूँ कि अरे मैं पगली हो, दर्शन तुम्हारे कर उधर भी तो है इस्कॉन टेम्पल। हाँ है बट इट इज नॉट इन दैट गुड स्केल, बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं बोलते। Enjoy your trip. Bye. Hari Bol. Enjoy your हरी trip. बोल, बहुत अच्छा थैंक रहेगा. यू। Big change. बहुत जरूरी है यार, सच्ची थक गई काम कर करके, बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी. जरूरी है। पता है वो 3 दिन भी कैसे निकलेंगे ना पता ही नहीं चलेगा। तो जब बस लास्ट टाइम हम लोग तो 2 रात है के लिए उस समय भी गए थे ना, तो मैंने बोला अरे पता ही नहीं चला कहाँ 2 दिन निकल गए, ऐसे लगता है कल तो गए थे घर में आ जाके फिर से। तुम बहुत सोचती हो ना, थोड़ा सोचना मत. लेट इट गो. जो चल रहा है चल नहीं देना. नहीं, मैं कुछ सोचती वोचती नहीं हूँ, मैं आजकल एकदम बिंदास हो गई हूँ, घर वाह, गंदा पड़ा है तो शाबाश। पड़ा रहने दो, मैं नहीं करती। अभी मेरी मेड अभी आई हुई जो मेड है वो इतनी स्पेशल है, 1 दिन आती है 2 दिन छुट्टी, 1 दिन आती है 2 दिन छुट्टी, तो अब दूसरी रखनी है, मैंने कहा आने के बाद रखूंगी, पड़ा रहने दो जैसे हो रहा है। जो जरूरी काम किया है किचन और कपड़े वो मशीन में धुल जाते हैं, किचन का काम चलता रहता है चलता है। अब मैं नहीं रगड़ पट्टी करती, क्योंकि हेल्थ ही नहीं सपोर्ट करता। आज सुबह भी बहुत हालत खराब थी, चैंटिंग वैंटिंग करके नाश्ते का खड़ा ही नहीं हुआ गया, सो गई, फिर दवाइयां ली तब जाके काम की, क्या करें, जब हेल्थ सपोर्ट नहीं करता तो हेल्थ के ऊपर तो अब नहीं कर सकते भैया। कोविड में जो फेस किया ना मैंने, उसके बाद तो समझ में आ गया कि भैया हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब बेकार है। घर में तो मैं अब लगती ही नहीं हूँ, जो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भाड़ में जाओ, कुछ नहीं होने का। आज सफाई करो कल वापस वही बराबर, सुबह करो शाम को बराबर, है कि नहीं। हम क्या करते हैं, करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। बस किचन की सफाई रखती हूँ जरूर कि किचन साफ रहना चाहिए, कुकिंग होती है और हरे कृष्णा. सोचना वोचना तो अब गया वो फेज। Enjoy. Bye. चलो टेक केयर, बाय। ओके बाय। आ रही हो वीनू? अन्नू तो आ रही है गाड़ी लेके। नहीं तुम्हारा पता करो ना, वहाँ इस्कॉन टेम्पल तो सब जगह है। हाँ इस्कॉन तो है मुझे पता है, बट पता नहीं वो लोग इतना एक्टिविटीज करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो अपने जैसे ही जाएंगे तभी तो उन लोगों को भी सपोर्ट मिलता है ना। आज अपने गुड़गांव टेम्पल क्या था स्टार्टिंग में, धीरे 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 तो बढ़ा ना, लोगों को अवेयरनेस हुई, लोग ज्वाइन किए, डिवोटीज बने, सेवा करते हैं। अभी भी
अपने गुड़गांव का स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना गुड़गांव टेम्पल बहुत पीछे है। बाहर के प्रभु जी लोग, एक बार वो जो अभी प्रभु जी का अपने लोग जो अटेंड किए थे ना बीनू सैटरडे को, क्या नाम है, सुंदर गोपाल प्रभु जी, उन्होंने यही बोला, दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली टेम्पल में यूथ फोरम के वो हेड है, उन्होंने यही बोला कि गुड़गांव में सब पैसे वाले लोग है दैट इज द फैक्ट। सारे वर्किंग क्लास, बिजनेस क्लास सारे हैं, सारे बड़े बड़े एमएनसीज के सीईओज, एमडी, सारे लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं। हाँ, भले अगर सब लोग थोड़ा सा भी ठीक से डोनेशन दे तो गुड़गांव टेम्पल कहाँ का कहाँ पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे तो पता है नीलम, यहाँ का जो इस्कॉन है ना, वो मेरी सिस्टर इन लॉ की कॉलोनी है, उसके किसी घर में बना हुआ है, सिंपल। आई हैव नेवर सीन एंड विजिटेड। कहाँ? अच्छा, ये तुम्हारे ग्वालियर ग्वालियर में? हाँ, तो वो इनिशियल स्टेज पे बहुत बार होता है ऐसा कि भाई धीरे धीरे सेटअप होता है ना। अब जैसे अपने जो डेटीज हैं ऑल्टर में, वो कोई डिवोटी है, उनके डेटीज हैं वो। अच्छा, तो जो अपने ऊपर जो टेम्पल हॉल बन रहा है, वो वो डेटीज तो रेडी है जयपुर में। हाँ और वो अपना अभी आएंगे टेम्पल, ना। हाँ, हाँ तो आएंगे कहाँ से जब तक टेम्पल हॉल रेडी नहीं होगा। हाँ, मतलब टेम्पल हॉल जब रेडी होगा तब आएंगे। हाँ बिल्कुल, बन गया, डेटीज रेडी है, राधा पर कृष्ण। ये वाले जो छोटे राधा कृष्ण हैं जिनको झूले में वो तो बिठाया रहते ही हैं, वो तो कितने हमेशा, क्योंकि है? ये फेस्टिवल वाले होते हैं ना, जब फेस्टिवल्स में हमेशा हर टेम्पल में प्रभुपाद ने वही सिस्टम किया ना, गौर निताई राधा कृष्ण सब जो फेस्टिवल्स के लिए होते हैं वो हमेशा अलग आगे रहते ही हैं वो। हाँ, तो जो बड़े वाले जो मेन डेटीज हैं उनको थोड़ी हिलाया जाता उनको नहीं हिलाते हैं। मैंने जगन्नाथ यात्रा जब इन्होंने निकाली थी ना 12th को, बहुत 13 सुंदर थी वो भी बहुत अच्छी मैंने किए थे। अटेंड करी थी। मैंने मतलब उनको मतलब ऐसे पंखा करा, रथ तुम को गई थी चक्का इस्कॉन दिया। टेम्पल? हाँ, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैंने तो यूट्यूब पे एक्सपीरियंस। ही अटेंड किया था, और देखा। मेरी हाँ, हमने तो यूट्यूब पे देखा था। बोट फेस्टिवल भी कितना सुंदर किए थे, हाँ। बहुत ही हाँ, सुंदर बोट था। फेस्टिवल भी अच्छा था। वीनू, तुम्हारे वीजा का कुछ हुआ? अभी एप्लीकेशन फाइल कर दी है। ओ, अब तो वीनू जाने वाली है, अब हमको मिलना पड़ेगा। 3 वीक्स। वीनू कहाँ जा रहे हो? अरे परसों क्या कर रहे हो पता है, मेरे को ये ध्यान में रहा कि हे राम, हम लोगों ने मिलने का प्लान किया था आपके बर्थडे पे। हमने पहले ही बता देती हूँ आपको सीक्रेट कि हम लोगों ने प्लान किया था आपके बर्थडे का। मैंने ये सैटरडे तो क्या बोलते हैं, आप बिजी रहोगे, आपकी मम्मी और भाई और फैमिलीज और सारे इतने लोग हैं। संडे आई। हाँ, अच्छा, सैटरडे हम तो इसीलिए सैटरडे का नहीं किए। ये अंजलि याद है ना, अपने लोग जो प्लान किए थे बीनू के बर्थडे के लिए, सैटरडे को बर्थडे है, तो हमने कहा कि सैटरडे तो बिजी रहेंगी, तो हम तो भाई आगे पीछे ही मिलेंगे। बोलो क्या करना है। हाँ, तो ये तो प्रोग्राम है। हम लोग लास्ट वीकेंड जा रहे थे, उस समय बुकिंग नहीं मिली कहीं पर भी, जहाँ जहाँ देखे बहुत रश है, सब जगह फुल है। ऐसे करो, तुम मैं भी तो हो मंडे को आ ही जाऊंगी। मंडे ना, तो हाँ, मैं तो मंडे को ट्यूसडे को मिल लेते हैं, वेंसडे को मिलते हैं। हाँ, देख लेते हैं, बना लेते हैं। अगर कल का बनता है तो कल का बना लो, थोड़ी देर कल मिल लेते हैं। कल का तो आपका बहुत कल जल्दी कुछ है? मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारे इससे क्यूट लग रही हो, इयररिंग से, लटकन से, है ना, फेस डिफरेंट लगता है ना लटकन पहनने से। आज मैंने बैंगलर्स जो पहनते हैं, सूट पहना है। हाँ वो पता है। तुम्हारा चॉइस ऑफ आउटफिट बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक। बहुत दिन बाद पहना है मैंने। सी द इयररिंग्स। आई एम सेइंग, तो वही तो मैंने बोला कि ये डैंगलर्स के साथ लुक अलग अच्छा लगता है। वो पता है, बड़ा टिपिकल टाइप का झुमका है विद डार्क मरून एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। ओह, हमारे तो कान ही नहीं है कि हम कुछ पहन सके। क्या बात कर रहे हो? कहाँ गए? मेरे तो दर्द हो जाता है बहुत जोर, बहुत दर्द होता है मुझे। एक दिन पहनूंगी तो 10 दिन तक खुला पड़ा रहेगा, कुछ नहीं पहन सकती। हाँ चलो, चलो को जाना है। हरे बाय, कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने कहा कल मिलना है क्या? तो नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ सुन, जल्दी क्यों, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं ना, हम आपको ऑप्शन थोड़ी दे रहे हैं। या तो बताओ। हाँ, या तो जबकि मेरे लिए फ्लाइट है, परसों जाना है, मुझे पैकिंग करनी है, तो सुन ना, 25 को उसका मीना का बेटा भी चला जाए तो वो फ्री हो जाएगी। उस दिन कह रही थी ना, कभी फ्री नहीं होती है। अरे पता है, हम 25 के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि जन्माष्टमी की तैयारी करनी है, फिर मंदिर भी अपने को सैटरडे को भी जाना है,
उस समय कुछ कुछ चलेगा, घर का काम, क्लास, जन्माष्टमी की तैयारी, क्योंकि मुझे भी सारी तैयारी करनी, कुछ भी नहीं किया। मेरा तो मंदिर भी नहीं साफ हुआ, मेरे लड्डू गोपाल भी कितने टाइम से पड़े हैं ऐसे ही बैठे ही हैं। वो तो मुझे कोसते ही होंगे कि कैसी है, मुझे ना नहलाती धुलाती है, कुछ नहीं करती। मुझे आने के बाद मुझे सब करना है। कब मिल सकते हैं बताओ? नेक्स्ट वीक में ही बना लेते हैं नीलम। नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेंसडे ये ट्यूसडे तो खैर मैं भी आऊंगी, मंडे को इवनिंग में देखना तो फिर बिजी एटलीस्ट रहूंगी। मीना तो पक्का ना बोलेगी। वो अच्छा, वेंसडे तो उसका बेटा जा रहा है, 25 तारीख है ना वेंसडे। 22, 23, 24, 25। अच्छा, वेंसडे तो होगा ही नहीं। ऐसा वेडनेसडे करते तो नहीं। खत्म करके मिलते हैं कब? जन्माष्टमी के बाद, क्योंकि ना हम लोग भी उज्जैन हमारा जाने जो का, एक साइड, हाँ मैं भी अपनी फ्रेंड्स के साथ उज्जैन जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ, तो 26, 27, 28। ओके ओके, अच्छा ठीक है, तो या तो उससे पहले 27, 28 यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पर 25 तक मीना बिजी है ना, तो उससे पहले नहीं मिल सकते, तो फिर जन्माष्टमी के बाद बनाते हैं। ये बात भी सही है, 30 तारीख के बाद हम फ्री हो जाएंगे। क्योंकि 30 के बाद आऊंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है सितंबर। कब आओगे वापस? कब? मैं मंडे इवनिंग। 28 को। उज्जैन से कब आ रही हो वापस? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सैटरडे। क्या बोला आपने? जन्माष्टमी के 27, बाद क्या 28 बोला आपने? 28 को आ रही है जन्माष्टमी के बाद। क्या जन्माष्टमी के बाद तो कभी भी बना लो, पूरा वीक फ्री है। पूरा वीक हाँ फ्री है जन्माष्टमी के बाद तो। उसके बाद वैसे मेन फेस्टिवल तो ऐसा कुछ है नहीं ना, बस राधाष्टमी आएगी, वो तो टेम्पल का है घर पे, तो ऐसे वो तो हाँ 8-10 दिन में आएगी। जन्माष्टमी के बाद मिलते हैं। राधाष्टमी 15 दिन है ना, इस जन्माष्टमी के बाद ना, तो 15 सितंबर के पहले मिलेंगे ना। 30 अगस्त के बाद मिलते हैं। जन्माष्टमी तो मंडे की है ना? 30 की है ना, तो 30 के बाद जन्माष्टमी मिलते मंडे की हैं। है, तो वेंसडे को मिल सकते हैं। हाँ 1 सितंबर को मिल सकते हैं, वेंसडे को। वेंसडे फर्स्ट है ना, फर्स्ट रीडिंग क्लास होती है ना। ट्यूसडे तो वो वनिता की है, भक्ति वृक्षा। वेडनेसडे आज मुझे भगवद गीता क्लास, नहीं वेंसडे फर्स्ट हुआ ना, 30th मंडे है, तो 31st ट्यूसडे हुआ ना, 1 सितंबर वेंसडे। क्या कह रही आज गीता क्लास? बोल रहे आज गीता क्लास में मेरा इतना टेंशन ही नहीं था, एक तो मैं काम में लगी हुई थी, प्लस वो बीच में बुक की बात करने लग गई ना, तो मैं निश्चिंत होकर काम में लग गई। मैं भी मुझे भी लगा कि बीनू देखा, बीनू का कैमरा ऑफ है, बीनू काम में लगी है। मैं सुन रही थी बस, तो मुझे लगा कि हाँ वो कुछ दूसरी बात हो रही, मैं थोड़ा सुन रही थी। थोड़ा काम की मार्केट गई थी, सामान वामान सब फैला हुआ था, किचन का थोड़ा बच्चों ने निपटाया था, थोड़ा बाकी था, मैंने कहा निपटा लेती हूँ, फिर जाना है मंदिर। तो बट ये कि बस अच्छी। हाँ मैं भी काम में लग गई अपने, मैंने कहा काम खत्म करती हूँ, क्योंकि कुछ गीता तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं भी अपना हाँ पूरे मैं 15 भी मिनट फिर वही की। तो उसके बाद ना वो मोमेंटम खत्म हो जाता है, मोमेंटम खत्म हो जाता है सुनने का, मेरा तो खत्म हो जाता है फिर। खुद ही पढ़ूंगी, मुझे इतना कुछ दिमाग में गया नहीं। मेरे को भी नहीं गया बस वो पहले का पढ़ा भाई, तो वैसे भी याद नहीं रहता। पर फिर भी एक बार रीड पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं अच्छा हाँ ये पढ़ा, बट कोई पूछे क्या है, कुछ नहीं है जयराम जी, कुछ दिमाग में याद नहीं रहता मुझे तो। चलो मुझे भी थोड़ा बाजार निताई प्रभु ने पूछा है संडे के लिए, मैं तो मना करने वाली थी, कर दो मना, आपकी राखी है ना। मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा ग्रुप हाँ तो में उन्होंने पूछा है कि सब कि यस नो करेंगे, मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा क्लास लेना है कि नहीं। डाल देती हूँ, मैं तो अवेलेबल संडे। हाँ क्योंकि उस दिन राखी है ना। आओगे क्या, मंदिर आओगे, चलोगे? आज नहीं यार, लेट हो जाएगा बहुत मेरे लिए। आपको क्या काम है बताओ तो, क्या चीज का लेट हो जाएगा? 8:30 बजे आप पहुंच जाओगे घर, 8:30 पौने 9 बजे। दिन का बना लेना कभी, फिर चल। नहीं मैं तो वो झूलन यात्रा के लिए जा रही हूँ ना, दर्शन करने, उसके लिए स्पेशली बोल रही हूँ। आज हो या नेक्स्ट टाइम चल। हाँ वो तो वैसे संडे तक ही तो है, बस देख लूंगी। पूर्णिमा कब है? संडे ही है ना राखी? हाँ संडे तक है, बलराम जयंती है ना, संडे तक। क्या है ना, दर्शन करने दिन में चले जाना।
चले जाएंगे। कल देख लूंगी मैं एक बार। मैं तो फिर रहूंगी नहीं। हाँ मैं तो रहूंगी नहीं, इसलिए मैंने कहा आज आया तो कल फिर जाने की तैयारी रहेगी ना, तो फिर निकलना नहीं होगा। कल चल सकती हूँ मैं, लेकिन कल मैं हो आऊंगी। चलिए जाना अंजलि, अच्छा लगेगा। मेरे को यार आप गाड़ी की दोनों बड़ी चले जाना ना प्रॉब्लम है। साथ में। अरे तो विनू है ना, ले लेगी। कल मेरे को तो तुम अभी फिर जाने लग गई क्या रोज? फैक्ट्री मंडे वेडनेसडे फालतू का है, फ्राइडे जा रही हूँ। घर में मन नहीं लगता तुम्हारा? आदमी नहीं छोड़ता। देख और लो अभी कितना लोग तो मानेंगे नहीं। कितना प्यार है। हाँ 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 कितना एक्चुअली वो तुमको अपने नजर के सामने रखना चाहते हैं, तो उनको हाँ, इंस्पिरेशन और एनर्जी वो तो मिलती आज है। भी पूछे, वो तो आज भी पूछे आज चल रही हो? मैं बोला नहीं, आज थर्सडे था ना, मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे किया है जाने का। वीक में 3 दिन, चलो अच्छा है ना, 7 में से 3 दिन जाना। पहले तुम हाँ सैटरडे भी जाती थी ना? सैटरडे तो मैं शुरू से ही नहीं जाती थी, पहले 5 दिन अच्छा, जाती थी, मंडे से फ्राइडे। तो बेटे को इंजेक्शन दो कि अब मुझे थोड़ी छुट्टी दो। अब मेरी तो उम्र बोलता आ है। गई है कि भगवान का नाम लेने की। तो वही तो पापा को समझाएगा ना। बोलो, तुमको बोलना था हस्बैंड को कि मैंने अपनी जगह इतना बड़ा खट्टा खट्टा बेटा दे दिया है, होशियार बेटा, वो संभालेगा ना। तो मुझे छुट्टी दो, अब मुझे लाइफ जीने दो अपने ढंग से अपनी। सही है। नहीं क्या, और कितना करोगे यार? हस्बैंड लोग का हाँ काम है, उन लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है अपना घर में और अपना थोड़ा अपना लाइफ को चिल करो। बोले जो मैं कर तुम्हारा रही हूँ तुम होगा लोग के तो लिए तो वीनू कर रही कब हूँ। तक जाओगी? वीजा वीजा हो जाएगा तो कब तक जाओगी? मंथ एंड जाऊंगी, सितंबर एंड में। तो आप दिवाली पे वहां रहोगे? अभी तो तक फिर दिवाली पे वहां रहोगे तो अनुष्का और आंटी सब इधर रहेंगे? नहीं मैं सब लेके अलग जाऊंगी। अलग? नहीं साथ लेके अच्छा जाऊंगी। सबका तीनों अच्छा जाएंगे। आप बोले ना, अच्छा आप बोल रहे थे ना कि अनुष्का को वहां छोड़ूंगी, आंटी को, अगर मम्मी वहां रह जाएंगी, सिस्टर का। कॉलेज तो आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल कट रही है। अगर उन लोगों का कॉलेज खुला तो छोड़ूंगी। कॉलेज तो खुलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वैसे नहीं छोड़ूंगी। कॉलेज खुलने का कोई चांस नहीं है अभी। और अब तो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सब छुट्टी छुट्टी है। अक्टूबर 4 तारीख की दिवाली है, नवंबर 4। हाँ 4 नवंबर की। 2 नवंबर मेरा बर्थडे अब की बार, धनतेरस पे। चलो तो मैं दिवाली पे ही हुई भी हूँ। चलो बात करते हैं। चलो फिर है ना। हाँ कल आना सुबह। और विनू, मैं आपको एक चीज बोल रही थी, मानोगे? मैं सुबह जाऊं? जल्दी उठ के ना, नहीं रुको 2 मिनट, सुबह जल्दी उठ रहे हो ना, उस टाइम को थोड़ा चैंटिंग में यूज करो ज्यादा। आप उसके बाद वॉक पे चले जाओ ना। उसके बाद कब टाइम जाऊं? में आप जैसे 5:30 ज्वाइन कर रहे हो ना, आप 5:15 खोलते हो मीटिंग तो 5:15 से आप 6:15 कर लो 1 घंटा चैंटिंग। न्यू ईयर वो मेरे ना फ्रेंड्स अकेले नहीं कर सकते। क्रूशियल टाइम में आप जो टाइम है उसका चैंटिंग का छोड़ के वॉक कर रहे हो, फिर 9 बजे करते हो। बात नहीं यार, सेहत भी बहुत जरूरी है। अगर पैर घुटने नहीं वो तो जरूरी है ही, मैं तो बोल नहीं कि मत जाओ, मैं कह रही हूँ तो आधी घंटा थोड़ा और चैंटिंग करके थोड़ा आधी घंटे बाद जा सकते हो। तो धूप गर्मी, हाँ और मेरे ग्रुप फ्रेंड होगा ना। सब सेट है कि 6 से 7 ही सबको टाइम होता है, उसके बाद सब बिजी हैं। मेरे हस्बैंड नहीं, उनके तो है। हाँ वो बात तो खैर है, नाश्ते का काम तो रहता ही है। मैं फ्री रहती हूँ, बाकी सब बिजी रहते हैं। हाँ वैसे थोड़े दिन की बात है, फिर तो आप वैसे भी बहुत जरूरी है, वो भी जरूरी है, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो जरूरी है ही। मैं तो फेस कर रही हूँ ना, मुझे पता है सब एक्सरसाइजेस बंद है तो जो बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं बहुत जरूरी है। नहीं वो बात तो खैर है। चलो चलो मिलते हैं। ओके मिलते हैं, बाय। ओके हरे बाय, हरे कृष्णा। कृष्णा।